Nanda Prabhu. We also were fortunate enough to have darshan of the Yoga Pit, the place of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We also saw Srivas Angan, the place of residence of Srivas Thakur, of Sri Advaita Acharya, Sri Gadadhar Pandit. We went to Chandrasekhar Bhavan, also the Samadhi place of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Also we went to the Samadhi pit of Sri Gaurkishore Das Babaji Maharaj, the place of the Samadhi of Sri Chand Kazi, and on our return we had prasad. How fortunate we were to have darshan of all these places. Especially Antadvip, which is the combination of Gokul and Mathura. That is the appearance place of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna accepted the bhav, the emotions and the complexion of Srimati Radhika and taught us the process of Raganuga Bhakti by the process of the chanting of the name of Sri Krishna. There he performed many wonderful pastimes in Antadvip, especially his Balya Lila, his childhood pastimes. One time there were two thieves who, when they saw the baby Nimai ornamented with many types of gold, they decided to kidnap him. Therefore they placed the child on their shoulders and they ran for a long time, and running, bewildered by the Lord's Maya, they found themselves back in the place of Jagannath Mishra. Then Sachi Mata and the devotees were in anxiety. They asked, "Oh, where were you? How you came here?" And the child simply smiled. There Mahaprabhu performed the pastime of going to school. Especially him and his friends would take bath in the Ganga. There the Smarta Brahmanas, they would perform their meditation on the bank of the Ganga. And baby Nimai would take the Ganga in his water and he would spit on the Brahmanas. Those Brahmanas would go and complain to Sri Jagannath Mishra. But what is this? This is an act of great mercy on the Lord, because the Ganga is the foot-bathing water of the feet of Chaitanya Mahaprabhu, but he would spit his Adaramrit, the nectar of his mouth remnants, on them and deliver them in that way. The young girls would worship there with desire to get the grace of Lord Shiva to have a good husband. But Nimai would demand, that worship you should give to me. If you worship me, you will get a very good husband. If you do not worship me, then I will curse you. You will have an old husband with many co-wives. Therefore, being fearful of the Nimai, those young girls would give their sandesh and bananas to him. There also, Nimai performed the pastime of leaving from here. He went to Gaya to offer pinda for the soul of his departed father, Jagannath Mishra. And there he met with his Gurudev, Sri Ishwar Puri. All this is described in Sri Chaitanya Bhagavat. And the next days we will hear all the writings of Sri Vrindavan Das Thakur. Then Nimai Pandit performed the pastime of accepting Harinam and Diksha from the Mahapurush Ishwar Puripad. And when he returned, he was transformed to Bhakta Nimai, Nimai the devotee. Absorbed in ecstasy, he heard a voice, "Don't go to Vrindavan now, you should return." Therefore he came back to Navadvipa and began the Sankirtan movement. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. With Srivas Thakur, Sanjay, Mukunda, Basugo, Sri Nityananda, and later on the other devotees like Jagai Madai, Sri Gadadhar Pandit, they engaged in Sankirtan Vilas there in Antadvip. Afterwards, Nimai took sannyas, and very cruelly, he left his newly married bride, Vishnu Priya, and his old widowed mother, and took sannyas. After taking sannyas, he went to Shantipur, and millions of devotees went there for his darshan. At the time of Nimai, this Nadia was a very big city, and every day the Lord would take his devotees on Sankirtan. Therefore he resided here for 24 years. 18 years he spent in Jagannath Puri, and 6 years he spent traveling to all the holy places. Some people have the opinion that it is in Gambhir, Jagannath Puri, that Chaitanya Mahaprabhu tasted his highest ras.
But this is not, and they give the argument, oh, Godavari is also a very high place. There Vishaka Devi, in the form of Sri Ramananda Roy, had darshan of Chaitanya Mahaprabhu as Rasaraj and Mahabhav. Therefore they think Godavari is high. They think that Godavari is the higher, and Puri is even more higher. Pastime of tasting Ras, and Mayapur of Navadvipa is the lowest. But Guru Maharaj said, according to Rasagat Vichar, conception according to the standard of Ras being tasted, actually the opposite is true. This Mayapur is the highest swelling of Prem Ras. Why? Because this Navadvipa is known as Gupta Vrindavan, and Jagannath Puri is rather compared to Dwarka or Kurukshetra, and Godavari is compared to Kurukshetra. Therefore here in this Navadvipa, all the Govardhan, Radhakund, Madhuvan, Velvan, Kumudvan, all the 12 main forests, the 12 sub-branch forests, all are here within Navadvipa. Therefore it is known as Gupta Vrindavan. But Puri and Godavari have never been called Gupta Vrindavan. Therefore here, the opulence of the Lord is covered by so much sweetness. Even though sometimes we see the Aishwarya or the opulence of Nimai, an example of that is his defeating of Digvijay Pandit. So here, there is such a swelling of sweetness in the Lord's pastimes. In the Gambhir and Jagannath Puri, Mahaprabhu tasted so much Aishwarya Lila was manifested there. Sometimes he would manifest a very long form. Sometimes he would become compressed to a ball. These are all opulence pastimes. But here in Vrindavan, sometimes he would cross the locked gates of Gambhira and enter into the ocean. But rather here in Mayapur, he completely tasted the ecstasy of Ras Lila through Sankirtan. And in Godavari, this is like the meeting of Radha with Krishna at Kurukshetra. Deva Sri Vishwanath Chakravarti Thakur has described there are 3 ecstasies of Srimati Radhika. Vrishabhanu Nandini, that is Radhika, the daughter of Vrishabhanu Maharaj, always meeting with Krishna. There is another Radha called Virahini Radha. That is like that Uddhav saw in Radharani in separation from Krishna at Nandagaon. And there is Samyogini Radha. That is that Radharani who met with Krishna at Kurukshetra. Therefore Sri Vishwanath Chakravarti Thakur has described all this clearly, that the highest mood of Radha is Sri Vrishabhanu Nandini Radha, and that mood Chaitanya Mahaprabhu tasted here in Mayapur. In Jagannath Puri, Mahaprabhu tasted the ecstasy of Radharani in separation from Krishna that Uddhav saw, and in Godavari there he tasted the mood of Samyogini Radha, Radha meeting again with Krishna at Kurukshetra. Therefore we measure something according to its sweetness, not according to the opulence. Therefore here in Mayapur he tasted the highest form of sweetness. Therefore Mahaprabhu tasted the highest ecstasies of Radharani here in Mayapur. Therefore, but really, did we have darshan of Mayapur, the Chinmoy Dham? We went, we saw some big temples, we saw things like that. But we could not see Chaitanya Mahaprabhu performing Sankirtan with Srivas Thakur, with Sri Gadadhar Pandit, with Vasudev, with Vasu Ghosh, with Murari Gupta, with Sri Advaita. We did not see Mahaprabhu's Sankirtan pastimes. Therefore, really, we are in the net or the covering of Maya that covers the Dham. We are not really residing completely in the Dham. Therefore, the Siddha Mahapurushas, the perfected devotees, they see these pastimes when they visit these holy places. Therefore, we should make some serious endeavor to see the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. Yadyapi se lila kori kori rai, kona kon, Bhagavan, deka kori pai. The pastimes of Gaura Hari are always manifested here, but only a fortunate person can see. Therefore, without entering through the pastimes and the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, then how one can enter into the mood of the Brijvasis? In Vrindavan, there are other sampradayas like Nimbaka Sampradaya. They also endeavor to taste the mood of the gopis. But really, without the conception of Rupa Goswami and Raghunath Goswami, how is it possible for them to taste it? They cannot taste.
without going through books like Bhakti Rasamrita Sindhu and Sri Ujjvala Nilamani. What to speak of, you cannot just read it, you have to follow what's in the books. Then you can understand what is the Bhakti Ras. There were other Sampradayas, secretly, they read these books, but reading is not enough, you have to completely follow them also. Therefore the highest moods of the Brijabasis is really tasted only by this Gaudiya Sampradaya. So that is the goal of our parikram, to try to make some serious endeavor to enter into these moods. Go Premanandi. Shamrani, she should speak something. Oh, she can come on this stage. She should come here, by this way. Speak. Sit down there. About Mahaprabhu. अरे छोटा करो. Fifteen minutes. Jnananjana salakaya Chaksurunmilitam yena tasmai Sri Gurave Namah. First I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipable Diksha Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Astotara Satasri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipable Shiksha Gurudev, Om Vishnupad, Astotara Satasri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to all of our Guru Varga and all the assembled devotees. Srila Gurudev has ordered me to speak something about the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Sri Sri Radha and Krishna. Sometimes people ask if Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Radha, then we hear that Gadadhar Prabhu is in the mood of Radha. So how do we reconcile this? Chaitanya Mahaprabhu is appearing in 5 features. As Chaitanya Mahaprabhu, as Advaita Acharya, as Sri Nityananda Prabhu, as Sri Gadadhar Prabhu, and Sri Srivas. So Chaitanya Mahaprabhu is not Radha as some people think, but as Sri Raghunath Das Goswami prayed to his mind, Sachi Sunam Nandi Surapati Sutatve Guru Varam. O mind, always meditate on Sri Chaitanya Mahaprabhu as none other than Sri Krishna himself, covered by the mood and complexion of Srimati Radhika. Sri Gadadhar Prabhu is Srimati Radhika herself. Krishna begged from Srimati Radhika that I want to borrow your moods so that I can understand 3 things that are missing in me. Krishna laments, as explained by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami
in Chaitanya Charitamrita. I am Purnanandamoy. I'm the embodiment of full happiness. By one atomic drop of my happiness, the entire universe can be drowned. However, I myself am bewildered by the love of Srimati Radhika. Her love is my praying guru, and it causes me to dance many novel dances. Just like the guru of the leaf is the wind. The wind blows and the leaf blows in the wind, not under its own control. So similarly, Krishna is saying that the prem of Srimati Radhika is my guru and causes me to dance many novel dances. Dances that are not under Krishna's control. He forgets who I am, where I am, in that way. So, the nature of Srimati Radhika's love, the mahima or the glory of Radha's love, drives him mad. Why? Because his own qualities are appreciated by her in such a way that even he cannot understand himself. Krishna is Atmaram and Aptakam. All of his desires are fulfilled and he fully takes pleasure in his own self. Yet, he cannot appreciate his own self, his own qualities, his own beauty, the sweetness of his flute playing, as Srimati Radhika can. And the happiness that she experiences is 10 million times greater than his. So, Krishna, in order to understand her love, begs her that may I please borrow, may I please adopt some of your moods. This prayer we pray to Sri Guru in all of our songs, to Gurudev. Let me be as you are, without any desires or anxieties. Ekaki amar nahi pai bol Harinama Sankirtan. I'm following you, simply calling out Krishna, Krishna. Please make me yours and let me be like you. So Sri Krishna prayed like this to Srimati Radhika. And she replied, yes, I'll give you my moods, but I will have to help you along. Just like we want to adopt the moods of Sri Guru, but we can never take those moods. Just like somebody is acting out Gurudev, they're imitating him and acting out his voice, acting out his moods, but he's watching. If somebody's doing a drama and he's watching. So similarly, Krishna is trying to adopt, by Radharani's mercy, her moods. And she's watching and helping. She told Sri Krishna, yes, I'll give you those moods, you can borrow them, but I will have to help you. I will personally come as Gadadhar Pandit, and my most intimate associates, Sri Lalita, she will come as Swarup Damodar, and Vishaka, she will come as Rai Ramananda, and we will help you out. We find that when Chaitanya Mahaprabhu went to Tota Gopinath, we see the garden there. And in that garden, Chaitanya Mahaprabhu would sit and hear Srimad Bhagavatam from Sri Gadadhar Pandit. Why? Because who is the best explainer of Srimad Bhagavatam, the pastimes of Radha and Krishna, from the point of view of Srimati Radhika, so that Krishna can understand? Who could explain the moods of Radhika better than Vishaka as Sri Rai Ramananda, so that Krishna could taste Srimati Radhika's moods? So Krishna is trying to adopt her moods, but she's watching and she's helping. As Srila Gurudeva just mentioned, when Chaitanya Mahaprabhu came back from Gaya as the new disciple of Sri Ishvara Puri,
Chaitanya Mahaprabhu in great ecstasy. Now he's Bhavik Nimai. He's no longer naughty Nimai or the proud teacher, Adhyapik Nimai, but now he's full of transcendental emotions. So when he came back at Sriva Sangam, he was singing Parahavitam Natavapu Karnio Karnikalam Bibratavasam Kanakakapisam Vaijayanti Chamalam Rantranavenu Radarasudaya Apurayana Gopa Vrindai Vrindaranya Svapararaminam Pravishati Kirti. So he was fainting, he was weeping, tears flooding from his eyes, and Sri Gadadhar Pandit, that is Srimati Radhika herself, in the form of Gadadhar Pandit, was watching behind the curtains, and in the form of twisting the ears of Krishna to teach him how to play her role. Sri Gadadhar Pandit began performing the same song, fainting more, weeping more, rolling more, to teach Chaitanya Mahaprabhu. So he is Krishna himself, adopting or trying to adopt the mood of Srimati Radhika. And in Navadvip, he's full Radhika. Just as Vrishabhanu Nandini Radhika is the complete form of Radhika, and Biyogini Radhika is her part, and Sanyogini is her part, and they're all present within her. Just as Srimati Radhika never takes one step out of Vrindavan, but her manifestations go to Kurukshetra, but those manifestations are with her. Kurukshetra is within Vrindavan. Jagannath Puri is within Vrindavan. Similarly, Dwarka is within Vrindavan. Similarly, just as Gurudev mentioned on the previous night, all pastime places, all holy tirthas of all universes are within Navadvip. So Godavari, the Tadpar of Godavari is also within Navadvip. Jagannath Puri is within Navadvip. Although Chaitanya Mahaprabhu appears to go there and take sannyas and to go to Rai Ramananda, he actually is always in Vrindavan, and therefore all the moods of all the other places, including the opulence of Jagannath Puri and the opulence of Godavari, they're all within Navadvip, and everything is within Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the source of all universes and all avatars. Gaur Premanandi Hari Hari. Very good presentation. Rasananda Paramachari, 15 minutes. Only 50. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदरशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को श्री चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारी परम सौभाग्य का दिन है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने जो बताया, कौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हैरवामी प्रणयी भगत संगे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमको तो परिक्रमा करनी ही चाहिए, लेकिन परिक्रमा करने का विधि क्या है? कहते परिक्रमा करने का विधि है प्रणयी भगत संगे। मेन वस्तु है प्रणयी भगत है। अगर कोई प्रेमी की भक्त हो, अगर उनको अनुगत्य में हम लोग परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा की पूरी फल हमें मिलेगा। अगर हमें कोई प्रणयी प्रेमी के अगर भक्त नहीं मिले, फिर तो परिक्रमा करके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को धारा में महाप्रभु जी अनर्पित चरित चिरात प्रेम को देने के लिए जगत में आए थे। उसी धारा में ही और विशेष करके उसी जिस चीज को महाप्रभु देने के लिए आए थे उसको प्रति जिनका विशेष रुचि है, ये भी होनी चाहिए। नहीं तो फिर परिक्रमा करने पर भी हमें परिक्रमा का पूरी नहीं फल मिलेगा। इसलिए हमारे महाराज जी की उसी प्रेम में, उसी भक्ति में, उसी राधा रानी की भक्ति में श्रील महाराज जी की विशेष रुचि है। इसलिए परिक्रमा हम नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा श्री गुरु जी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम कथा सुनेंगे हमारा बुद्धि भी उसी तरह उधर जाता है। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य श्रील महाराज जी के अनुगत्य में हम लोग श्री धाम गौड़ मंडल परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोग विभिन्न वक्ताओं को मुखार बिंद से श्री धाम नवद्वीप की कथा को विभिन्न दृष्टिकोण से महिमा को श्रवण किया है। मैं भी थोड़ी बहुत महाराज जी के मुखार बिंद से जो सुना हूँ, थोड़ी बहुत भाव को प्रकाश करने के लिए अभिव्यक्ति करूंगा। कहते बहुत धाम है, लेकिन ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का विशेष फल क्या है? यद्यपि बहुत धाम है, लेकिन इस विषय को श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा ग्रंथों में वहां पर श्री शंकर पार्वती का संवाद है। एक समय पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, कहते प्रभु आपके मुखार बिंद से हमने बहुत कथा सुनी है, बहुत धाम के बारे में भी हमने सुना है, लेकिन हमने देखा आप कभी कभी गौर गौर नाम बोलते हो, कभी श्री चैतन्य चैतन्य नाम बोलते हो, कभी श्री कृष्ण चैतन्य भी बोलते हो। मैंने बहुत सारी नाम हमने सुनी है, लेकिन अभी तक हमने कभी श्री कृष्ण चैतन्य गौर ये सब नाम हमने नहीं सुना है। कहते वो क्या चीज है? गौर है कौन? श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों उनको पड़ा है? और ये नवद्वीप धाम की क्या महिमा है? इसलिए आप कृपा करके बताओ। तब इसकी महिमा को बताने के लिए शंकर जी श्री अनंत देव और भगवान विष्णु की संवाद को उन्होंने बताए। जब एक समय श्री अनंत देव वे भगवान विष्णु के पास में गए, जा करके भगवान विष्णु से बोले, कहते हे प्रभु मैंने ये विश्व ब्रह्मांड को अपना सिर पर धारण करके रखा हूं और सारे विश्व ब्रह्मांड को हम भी जानता हूं, लेकिन हमने सुना एक दिव्य भगवान का धाम है जो श्री गोलोक वृंदावन है।
जहां पर श्री प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण जहां पर नित्य निरंतर लीला करते हैं, वो श्री वृंदावन धाम कहाँ है? कहां पर श्री राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं? इसलिए आप कृपा करके वो बात को बताने के लिए कोशिश करें, और वो धाम को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? जब यह प्रश्न सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, कहते अनंत देव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम श्री राधा कृष्ण का दिव्य गोलोक वृंदावन के बारे में तुम सुनना चाहते हो। साधारण बात नहीं तुम जो प्रश्न कर रहे हो। दूसरे दूसरे धाम को कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम को राधा कृष्ण के सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति कुत्ते का पूंछ पकड़ करके अगर कोई समुद्र को पार होना चाहता है, जैसे असंभव है, उसी तरह भगवान राधा कृष्ण का भक्ति पाना वो बहुत बहुत ही कठिन है। करोड़ करोड़ जाग यज्ञ अश्वमेध को द्वारा भी जिस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहते हे अनंत देव, साधारण व्यक्ति का बात छोड़ दो, मैं स्वयं विष्णु जो कर्णदशाय विष्णु, गर्भोदशाय विष्णु, क्षीराब्दिशाय विष्णु, कहते इन लोगों के लिए भी वो धाम प्राप्त नहीं। इतने दुर्लभ धाम है जिसके विषय में तुम प्रश्न करते हो। इसलिए हाँ, उसको पाने का एक उपाय है, सबसे सरल उपाय है। कहते सबसे सरल उपाय क्या है? कहते सबसे सरल उपाय, अगर कोई ब्रज गोपियों की अगर कोई अनुगत्य कर सकता है, कहते ये सबसे सरल उपाय है। ब्रज गोपियों को अनुगत्य के द्वारा ही वो दिव्य गोलोक वृंदावन राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम को प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो वस्तु भी साधारण बात नहीं, गोपियों की अनुगत्य करना, क्योंकि जिस ब्रज गोपियों की केवल एक चरण धूली, उद्धव जैसे आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम बोल करके उद्धव जी की एक चरण धूल को प्रार्थना करते हैं। जहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, न बिरिच न भवन न श्रिय अपि अंग संश्रय। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, कहते जिस ब्रजवासियों का सौभाग्य, यहाँ पर ना 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 ये 3 बार यहाँ पर प्रयोग किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं न भव, कहते जिस प्रेम को कहते स्वयं शंकर जी को भी प्राप्त नहीं, कहते जिस प्रेम को न विरिंची, कहते जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं, कहते और किसी कहते ना, कहते साक्षात भगवान का बख्या विलासिनी श्री लक्ष्मी को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते न भव, कहते जिस प्रेम श्री शंकर जी को प्राप्त नहीं, कहते शंकर जी कौन है? कहते जो हरिहर एकात्मा। कहते न विरिंची, कहते जिस प्रेम ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं, कहते ब्रह्मा जी कौन है? कहते जिनका बेटा है। कहते न श्री, कहते जो प्रेम श्री लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं, कहते लक्ष्मी कौन है? कहते लक्ष्मी साक्षात भगवान का बख्य विलासी। इतने दुर्लभ ये प्रेम है। इसलिए हे अनंत देव, ये प्रेम प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं। कहते मिल ही नहीं सकती है। कहते हाँ, मिलने का और एक बहुत सरल उपाय है। कहते तो क्या सरल उपाय है? कहते अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे रसिक भक्तों का अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप आए, और श्रीधाम नवद्वीप में वैष्णव का अनुगत्य में नवद्वीप धाम की परिक्रमा करे, और सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु का चरण को अगर कोई आश्रय ग्रहण करते हुए अगर कोई भगवान का भजन करेगा, तो कहते जो दुर्लभ प्रेम सबसे आसानी से ही मिल जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग, से राधा माधव अंतरंग। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरव प्रेम रसार्णव में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई भजन करे, कहते आसानी से ही वो प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। और ये कलियुग कैसा है? कहते ये कलियुग धन्य कलियुग है। इसलिए कलियुग भी कोई साधारण युग नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। कहते एक समय श्री कलियुग अभी राजत्व कर रहा है। कहते ये 4 भाई है, सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली। अभी 3 भाइयों का राजत्व चला गया, सत्य, त्रेतया और द्वापर। अभी कलियुग राजत्व कर रहा था।
एक समय ये तीन भाई अपना कलियुग को देखने के लिए आए, कहते हम भी अपना अपना राज्यत्व की है, अभी हमारा छोटे भैया कली कैसे राज्यत्व कर रहा है। जब ये छोटे भाई के साथ में मिलने के लिए आए, वहां पर दरबार था, उन्होंने पूछा हमारा कली राजा है, कहते हाँ, कहते जा करके बोलो उनका तीन भाई उनसे मिलने के लिए आए। जब उन्होंने बोले आपका तीन भाई सत्य त्रेता द्वापर आपसे मिलने के लिए आए, कलियुग ने कहा मैं उनको साथ में मिलना नहीं चाहता हूं, बोल दो वापस चले जाए। दरुआन आकर के बोला कहते आपसे मिलना नहीं चाहते। फिर ये तीन भाइयों ने बताया, उनको ये बताइए किसी तरह से आप छोटे भाई हो, किसी तरह से केवल आंखों में आंख मिलाकर चले जाएंगे, इतना ही बोलो। फिर जाकर कलियुग को बोले कहते केवल आपसे केवल एक बार मिल करके जाना चाहते हैं, कहते उनका मुंह तक भी मैं देखना नहीं चाहता हूं। कहते ऐसे क्या बात है। फिर आकर के बोले लेकिन बहुत जब अनुनय विनय किया तब कलियुग बड़ी कठिनी से आए। आकर के उन्होंने पहले तो सत्यजीव को बड़े डांट लगाया, बोले ये बताओ तुमने क्या किया है। सत्यजीव आकर के अपना अपना राजत्व किया, तुमने कुछ तो जीव का कल्याण किया ही नहीं, केवल लोगों को कष्ट ही कष्ट दिया। क्योंकि कृत्य जत ध्यायते विष्णु, सत्य युग में जो धर्म था वो ध्यान है। आप लोगों को पता है 60-60 हजार साल तक सिर नीचा करके पैर ऊंचा करके चारों तरफ में आग लगा करके कितने कठोर साधन करते थे, लेकिन इतने साधन करके तुमने लोगों को क्या दिया है। तुमने बहुत ज्यादा से ज्यादा उनको मुक्ति प्रदान कर दिया, सालों के साष्टी सामीप्य ज्यादा से ज्यादा कहीं वैकुंठ लोग दे दिया, उससे तो तुमने कुछ ज्यादा नहीं दिया। उनने त्रेता युग में भी बड़े डांट लगाया, बोले तुम भी जीवों के बोले कष्ट ही कष्ट दिया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। बोले क्यों। कहते त्रेता युग का जो युग धर्म था यज्ञ है, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, और जो लोग हवन करते उनको पता है स्वाहा स्वाहा करते रहो, धुआं में मुंह भर जाएगा, आग को पास में बैठना पड़ेगा, रोज रोज स्वाहा स्वाहा करो। कहते करते करते तुम भी जीव का किया कल्याण, ज्यादा से ज्यादा वही मुक्ति सालों के साष्टी साम्य पर ज्यादा से ज्यादा कहीं अयोध्या भी दे दिया, और तो ज्यादा तुमने कुछ दिया नहीं। बोले द्वापर युग में भी उन्होंने डांट लगाया, बोले तुमने क्या की है। अर्चन था, अर्चन के लिए भी धूप दीप नैवेद्य पुष्प और मधुकर्म पंचामृत ये कुल चाहिए पूजा के लिए। तुम भी लोगों को कष्ट दिया, कष्ट देकर के जीव को ज्यादा से ज्यादा कहीं धाम नहीं पहुंचाया। लेकिन देखो मैंने क्या किया है। ये कलियुग आकर के उन्होंने क्या किया, कहते धन्य कलियुग है। जिस युग में मैं आकर के सखा, जिस युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, और कलियुग में उन्होंने क्या धर्म है। कहते कलियुग में कोई ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। इसलिए श्रील नरोत्तम श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ए मन गौरांग बिने नहीं यार, है ना अवतार हवे की होए छे, है ना प्रेम प्रचार। कहते दुरामति अति पतित पासंडी, प्राणे ना मारी लकारे, हरि नाम दिया हृदय सोथिल, जाची गया घरे घरे। और उन्होंने क्या किया, कहते ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जय प्रेम, जगत फैलिल ढाली, कांगाले पाइया खाइल नाचिया, बाजाया करताली। इसलिए मैंने कलियुग में आकर के कोई लोगों का ज्यादा परिश्रम नहीं करने के लिए दिया, केवल इतना ही है। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बाजाया करताली, कर मतलब हाथ, अगर मजरा मृदंग नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान का हाथ दिया, केवल करताल बजा करके भगवान का थोड़ी नाम कीर्तन करो। और वो नाम कीर्तन को तो हमने क्या दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता, नियमित स्मरण न काल, एतादृशी तव कृपा भगवान नामापि दुर्दैव मिहा जानी नानुराग। इसलिए उन्होंने कोई काल पात नहीं रखा और कोई पात्र अपात्र उन्होंने नहीं रखा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं के जा भी रे भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुगर चैतन्य अवतार। जिस चैतन्य अवतार में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आकर के कहते सब जीव पार है प्रेम बाता से। कहते प्रेम नहीं, केवल प्रेम की हवा अगर किसको शरीर में लग गया, देखो वो हवा कहां से कहां तक महाप्रभु धारा में आया, आते हुए धीरे धीरे गुरु परंपरा में आते आते प्रभुपाद, उसके बाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उसके बाद में भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के पास में आए। कहते वो प्रेम की हवा कहां तक पहुंचा, देखो संपूर्ण विश्व में वो हवा पहुंची। जिस हवा की थोड़ी सी झोंक लगा तो आप जैसे कितने मधुकर आप लोग कहां से कहां आकर के श्री महाराज जी को श्री चरण में आकर के उनका शरणागत हुए हैं। और उन्होंने कलियुग में उन्होंने क्या दिया, चैतन्य महाप्रभु आकर के
कहते हेला धुलित दया विषय दया प्रेमिल दाम दया सस्वत सत्र विनोदया रस दया उन्मादया श्री चैतन्य दया निधि तब दया अमोद दया दया चिराग दत्तम निज गुप्त बीतम। कहते बड़े दिन से जिस प्रेम को उन्होंने, जिस अनर्पित चरित्र प्रेम को उन्होंने नहीं दिया था, कहते निज गुप्त बीतम। कहते गुप्त बीतम का मतलब क्या है? कि जिस संपत्ति को स्वयं कृष्ण अपना हृदय में छुपा करके रखे थे, जिस प्रेम को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो भक्ति जो कहती महाप्रभु जिस प्रेम को देने के लिए आए वो मंजरी बाप को, ये साधारण वस्तु नहीं, कि जिस चीज को गुप्त, जिसको अपना हृदय में छुपा करके रखे थे, कहते गुप्त बीत को जिस प्रेम को देने पर स्वयं उनको जत किंकर बहुत हलुका वाणी नित्यम परस पुरुष से शिखंड मौले जस्या कदार स्वनीति वृषभान जाया तत्कली कुंज भवनांग घनिमार्जन श्याम। जिस मंजरी भाव को कहीं भगवान किसको चरण में कभी झुके हैं, जिनको चरण में विश्व ब्रह्मांड झुकते हैं, लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिस गुप्त बीत को दिया, जाकर के राधा रानी जब निकुंज भवन में कभी राधा रानी मानिनी होकर के बैठी, बाहर मंजरिया गोपियां हैं, श्याम सुंदर जाकर के उनको चरण में भी प्रार्थना करके ताकू बहारी बोलते हुए उनको चरण में प्रार्थना करते हैं। साक्षात परात पर तत्व होते हुए भी अपना भक्तों को चरण में सिर झुका देते हैं, ये गुप्त बीत है। और जिस प्रेम को प्राण प्रश्न सखी जिस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए, कहते वह प्रेम को कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आकर वह प्रेम को उन्होंने प्रदान करते हैं। और जिस प्रेम को उन्होंने प्रदान किया, कहते ये एक विशेष वस्तु है। अन्य अवतार को कृष्ण को उपासना करने पर केवल जीव एक प्रकोष्ठ में उसको स्थान है, दो प्रकोष्ठ में नहीं। केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में जो भजन करते हैं, केवल उन्हीं के लिए ही दो प्रकोष्ठ। एक प्रकोष्ठ में राधा कृष्ण की उनको मंजरी रूप में, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी रूप में, और महाप्रभु को लीला में श्री रूप गोस्वामी रूप में, जैसे सनातन गोस्वामी लबंग मंजरी रूप में, महाप्रभु की लीला में सनातन गोस्वामी रूप में, स्वरूप दामोदर महाप्रभु लीला में, और ललिता सखी बन करके श्री राधा कृष्ण की सेवा। इतने दुर्लभ प्रेम को चैतन्य महाप्रभु आकर के ये जगत जीव को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए ये प्रेम को उन्होंने कभी प्राप्त कभी किया ही नहीं। इसलिए हम लोग परम सौभाग्य है, उसी धारा में, उसी रस धारा में हमारे महाराज जी है। इसलिए उनको अनुगत्य में हम लोग, हाँ ऐसे रसिक भक्तों का अनुगत्य में भजन कर रहे हैं। जरूर प्रेम हमें मिलेगा ही। वंशाकल कृपा सिंधु पिता नाम पावन भो वैष्णव। रसानंद ने रस की वर्षा कर दी। प्रेम प्रयोजक ब्रह्मचारी 15 मिनट only। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलमय विग्रहाय हेमभदिव्यश्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of Asmadev Paramaradhatam Guru Pada Padma Om Vishnu Pada Ashtotra Satasisimat Rupanugatyarivara Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Vardashi Guru Parampara. And I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas, Ananya Chudandi Padagan,
and all the Vaishnavas and Vaishnavis from around the world who have assembled here to hear the current of nectar flowing from the lotus lips of Srila Gurudeva. It is very difficult to say something in the presence of so many learned personalities. It's extremely rare in the whole universe that any living entity has the opportunity to hear such katha, which is so full of siddhanta, so full of perfect conclusions of Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, and so full of bhakti rasa. Still, I pray by the mercy of Gurudev that I can take some remnants. Vaishnavas have tasted so many flavors of Mahaprabhu's Nam, Rup, Gun, Lila, Parika and Dham. But I pray that from the plate I may take little of their remnant. Sri Krishna, he was thinking to himself that Shokole jagati kare more vidhi bhakti braja bhava paiti nahi shakti. Throughout the world, many people, they are practicing bhakti. Many acharyas came, Madhvacharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya, and they taught about bhakti. But those who are following them, they're worshipping me with Aishwarya Gyan, knowledge of my opulences. But Aishwarya Gyaneti Sab Jagatamisrit, Aishwarya Shitila Prema Nahi Mora Preet. This love, which is mixed with knowledge of my opulences, it is okay, but I am not fully satisfied. It cannot control my heart. I prefer the love of the residents of Vrindavan, Mother Yashoda. Even though I am the maintainer of the whole universe, Mother Yashoda thinks if I don't feed my Lala some breast milk, what will happen? He'll become skinny. My friends, they think, hey Krishna, what kind of big man are you? We should fight. I will defeat you in wrestling. And more than that, my beloveds, Radhika, Lalita, Vishaka and others, they sometimes criticize me with harsh language. Priya yadiman kare kare vatsan, Veda stuti hoiti hare se moraman. Brahma, Shankar, Narad, they offer prayers of the Vedas, Veda stuti. Om sahasasi sapurasaha Sahasraksha Sahasrapate. And when they offer prayers to me, I hear. But when Radhika, Lalita, Vishaka, they say to me, oh Krishna, you're dirt. You are cheetah. You're Mityavadi, you're liar. You are Parastri Chor. You are the thief of others' wives. At that time, I forget all the Vedic mantras. I don't listen to Brahma, Shankar, Narad and others. Because their sweet words, their chastisement, it steals my heart. So I want to distribute in the world a bhakti like this. It was not given before. So Sri Krishna, he came in this world and he performed his Leela. And after disappearing, again he appeared as Chaitanya Mahaprabhu to teach all the living entities how to enter into that sweet Krishna Leela. Apani karimu bhakta bhava angikare, apani achari bhakti shikamu sabare. Krishna thought, I will assume the mood of a devotee and I will teach bhakti to everyone by practicing it myself. So Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu and began to do Harinam Sankirtan here. Yuga Dharma Pravataimu Nama Sankirtan Chari Bhava Bhakti Diya Nachamu Bhuvan. I will appear in this world and I will cause everyone to dance, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Rama Hare Hare, and distributes 4 moods. The mood of servants in Vrindavan, friends in Vrindavan, parents in Vrindavan, and especially of gopis in Vrindavan. Only Chaitanya Mahaprabhu could do it. He said, Yuga Dharava, Yuga Dharma, Pravatana, Hoy Angsa Hoite, Ami Bina Nahianye, Braja Prema Dite. Any other avatars, incarnations of Narayan, they can establish Yuga Dharma. But only Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nahiyanya. Radha Krishna combined, only he has the adhikar, the qualification, to distribute Braj Prem through the medium of Harinam Sankirtanam. So, if there's a person for whom you have affection, for whom you have love and respect, then you may sit down and take some flowers and string them and make a mala, make a garland. And then, as an offering of love to that person, you present that garland to them. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he took the flowers of the Maha Mantra, Hare, and he strung it on a sutra. Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, Hare. And he made a mala of Krishna Nam. Before Mahaprabhu's appearance, the Maha Mantra was being chanted. That Maha Mantra is in Kalishantara Upanishada. So since ancient times it was chanted. But the result was not the same. But Chaitanya Mahaprabhu, he took the flowers of the holy name and he chanted that name in the mood of Radharani and put inside the flowers of that name the Prem Sutra. So, Eri Dware Achandale Kirtana Sanchare Nama Prema Malaganti Paraela Sangsare. Chaitanya Mahaprabhu, having so much mercy for all the living entities of the world, took the garland of Hare Krishna Mahamantra with a Braja Prem inside. He made this garland and he offered it to everyone. Ekvare Achandale, from the top down to the lowest people, out of compassion. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jiva Daya Kore Swaparshada Suyadama Saha Avatari. Out of compassion for all of us, he came to this world. If there is a very rich person, a wealthy person, he lives in his mansion, he's very happy. He does not think that there are others very far away and that they are suffering. But if someone has a very soft heart, they will come out from their place and go there to those who are suffering and give them some charity. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is relishing the Mahabhav in the Nitya Dham, Nitya Navadvipa. But because his heart is so soft, he appeared here in this world and distributed in charity something to all the wretched persons who were fallen and suffering. But what thing? Achanta durlabha prema kari paridhan shikaya sharanagati bhokotera pran. He came here and gave the very highest thing to the lowest persons. Atyanta durlabha prem, an extremely rare type of prem. The prem of Brijbasis, and among 4 types of prem of Brijbasis, especially the mood of the maid servants of Srimati Radhika. So, this is the external reason for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, to distribute Braja Prem to others. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has his internal reasons for appearing. When Krishna performed his Leela in this world, upon seeing the Prem of Srimati Radhika, he was astonished. He could not understand how deep is his love. He wanted to see how deep it was. So during the Rasa Leela, Shri Krishna disappeared. And hiding in a kunj, he watched the reactions of Srimati Radhika. How she was weeping in separation. How she cried, Yate sujata charanam buruham staneshu Pitashanai priyadadi mahika kaseshu.
Tena tuvimatasita dyatatena kimswit kurpadi bi brahmati di babadaya shanna. Oh Krishna, if I have no opportunity to serve you, what is the use of my life? So let the remainder of my life be added to yours. I should give up my life now, and the remainder of my life should be added to yours, so you can live a long time in Vrindavan and enjoy your vilas there. Krishna saw this, something of the depth of Radhika's love, but he could not understand it. He left Vrindavan and went to Mathura. And when Radhika was weeping in separation, Krishna himself came back to Vrindavan as that bumblebee. And Radhika spoke, Madhupakitava bandhu maspasangim sapatnya. Again Krishna is watching the prema of Radhika, thinking, how deep is his love? I cannot find the bottom of it. So in order to understand the internal moods of a person, then you have to get their mercy. So we know that once Srimati Radhika was in Man, and she told Krishna, Jahi Madhava, Jahi Keshava, Mabada Kaitava Badam. Leave my kunj, get out of here, I don't want to hear your cheating words. And Krishna prayed to Radhika, Priyai Charushile, Priyai Charushile, Smaragarala Kandanam, Mama Sirasi Mandanam, Dehi Padapalavam Udaram. Oh Radhika, I am burning from the poison of Kamdev. So please save me by decorating my head with the beautiful soft petals of your lotus feet. And Sri Krishna took the lotus feet of Radhika upon his head. Why was this? For example, if one wants to understand the internal moods of Srila Gurudev, then one will have to take the lotus feet of Gurudev on his head. That means do Shanarati and pray that those moods will come in the heart. So in the same way, Krishna said, Radhikara Prema Guru Ami Shishnat Amasadanana Nritye Nachaya Udbat. So outwardly, it looks that Krishna is bowing to Radhika to pacify her mind. But inwardly, he's astonished at the extent of her prema. And taking her lotus feet upon his head, he's taking a blessing that he can realize that love. And therefore, he appeared from the womb of Sachimata here in this world as Sri Chaitanya Mahaprabhu. And by the blessing of Radhika, he realized Radha Bhav. Jai Sachinandan Gohari Nitai Gora Premanande. হরে কৃষ্ণ। কাল আমরা জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের ভজন কুটি এবং সমাধি মন্দির এবং रुद्रदीपे दर्शने যাব। कल हम लोग रुद्रदीप, कल एकादशी तिथि है। आज रात को कोई चावल या सब्जी मत रखिएगा, मूढ़ी भी नहीं रखना है, नहीं खाना है। कल के एकादशी तिथि আপনারা রাতে কেউ অন্ন পান্তা ভাত করে রাখবেন না আর মুড়িও খাবেন না। কাল আমরা জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের সমাধি মন্দির, রুদ্রদ্বীপ, প্রৌঢ়মায়াতলা, বৃদ্ধ শিব দর্শনে যাব। যারা রিক্সা যাবেন, রিক্সার ভাড়া 60 টাকা, দুজনের জন্য এবং নিচে বসবেন 20 টাকা। এক দুজন তিনজনের বেশি কেউ রিক্সায় বসবেন না। আর কালকে একদম সামনেই দর্শন, পায়ে হেঁটে গেলেই ভালো। আর ভ্যানে গেলে 20 টাকা पर हेड, ভ্যানে গেলে 20 টাকা করে দিতে হবে। कल एकादशी तिथि है। कल हम लोग रुद्रदीप, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज समाधि स्थल, भजन कुटी और प्रौढ़माया तला वृद्ध शिव दर्शन में जाएंगे। जो लोग पैदल चल नहीं सकते हैं वो रिक्शा में जा सकते हैं या जा सकती हैं। रिक्शा का दो जन के लिए किराया 60 रुपया है। जो नीचे बैठेंगे 20 रुपया। 3 आदमी से अधिक रिक्शा में नहीं बैठना है और पैसा भी रिक्शा वाला को पहले नहीं देना है, आने के बाद ही देना है। Tomorrow we'll visit Rudradeep and Samadhi place of Jagannath Das Babaji Maharaj and his Bhajan Kuti, Praunamayatala and Vriddhasi. So, if someone, and tomorrow is Ekadashi, and who could not walk, if they want a rickshaw for 2 person 60 rupees. If 3 person, then who will sit down, then 20 rupees.
don't pay advance. When you return here, then you can pay complete payment. Tomorrow we'll start from here. 5:30 बजे हम निकलेंगे. Tomorrow 5:30 AM. 5:30 बजे हम लोग निकलेंगे. कल के আমরা সকাল 5:30টার সময় বেরোবো. আর কালকে সভা, tomorrow is very short parikrama, so sabha will start before 5. So Gurudev request everyone, to all sannyasis and brahmacharis and all devotees, to come here before 4:30, and kirtan will start positively 4 PM. कल हम लोगों का परिक्रमा बहुत संक्षेप है, इसलिए गुरुजी 4:30 बजे सभा शुरू करना चाहते हैं. 4 बजे तक सबको आना है. এই বিশাল পরিক্রমা পরিচালনার জন্য অনেক ব্যয়ভার বহন করতে হয়. যারা এখনো নাম রেজিস্ট্রেশন করেননি, রেজিস্ট্রেশন করিয়ে আপনার টিকিট সংগ্রহ করে নিন. আমাদের ওখানে টিকিটের কাউন্টার আছে. যারা এখনো নাম রেজিস্ট্রেশন করেন নাই, नाम रजिस्ट्रेशन करिए, टिकट संग्रह करे निवेन. जो लोग अभी अपने परिक्रमा फीस नहीं जमा किया हो, वो लोग कृपया, बहुत लोग कहते हैं मैं गुरुजी को दे रहा हूँ या दे रही हूँ. गुरुजी को आप देते हो उनका प्रणाम ही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये जरूरी है. इसके सिवाय आप लोगों के सहायता के बिना इतना बड़ा परिक्रमा मेंटेन करना संभव नहीं है. इसलिए आप लोग से निवेदन करता हूँ, जो दिल्ली के डिवोटी हैं वो अपने नाम रामचंद्रपुर से रजिस्टर करा करके उन्हें फीस जमा कर दें. The Western devotee who has not registered their name yet, I am requesting them go registration office on the front gate and pay your registration fee. Without the help of your all devotees, is not possible at all. Tomorrow, for Western devotee initiation will be 9 AM. Tomorrow, initiation for Western devotee 9 AM. Who has not registered their name yet, they can register their name with Giridhari Prabhu. So, who will take initiation, they will go also parikrama. As soon as you come back and come to there. For भारतीय भक्तों के लिए पूर्णिमा के दिन दीक्षा होगी.